Hello friends, welcome back to my channel. My name is Saloni. I hope you all are doing great. Sorry guys, I was not able to put up any videos because I was not keeping well. And later on जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो my pet was not keeping well. Murphy was not keeping well. Health is much better now. So I thought of putting up a video. So sorry guys, I was not uploading videos. I would be now regularly trying and uploading all videos. I've bought stuff from Nykaa, Colourpop. So videos are lined up. I would be making videos and definitely uploading videos soon. There are many new launches that I want to share with you all. So वो भी मैं I'll start uploading, but give me some time because Mopi was not well, so थोड़ा उस पे अभी ध्यान देना पड़ता है. After some days, definitely I'll try putting up uploading regular videos. So today's video is going to be about first impressions of Lamel products. Lamel is a brand that has come to India some time back. So मैंने Lamel के products की unboxing video बनाई थी. अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. So वही products यूज किए हैं मैंने and this is the first impression of those products. So today I'm going to give you my thoughts and review about these products. So this is going to be a first impression video for Lamel products. So guys, if you like my content or if you like my video, please do like and share my video with your family and friends. And also do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I put up a new video. So without any further ado, let's get into the video. So guys, the first product that I want to share with you all is a concealer from Lamel. So this is Lamel's Oh My Clear Complexion Concealer in the shade medium beige. This is a very good concealer. So this is a water resistant concealer. The texture is creamy texture. It blends really very well into your skin. आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मेरी स्किन में ये blend हो गया है. It definitely covers your dark spots. Pigmentation, it is of very nice and smooth consistency. ये आपके dark spots को pigmentations को भी cover करता है. You can see I have applied it on my eyelids as well as on my pigmented areas on my face, and you can see बहुत अच्छे से इसे इसने मेरे pigmentation को cover किया है. Guys, if you want to buy any concealer to cover your pigmentation, you have to buy a a shade darker than your skin, so that will help you cover your pigmentations. So ये इसने मेरे pigmentations को अच्छे से cover किया है and it's very smooth, it's very smooth, very blendable, it's buildable, आप build कर सकते हो and it gives a very nice base for your makeup, for your eyeshadow and बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है. इट्स वेरी लाइट वेट और ब्लेंड हो जाता है. इट डज नॉट क्रीज. ये कंसीलर क्रीज नहीं करता है. ऑफ कोर्स यू नीड टू सेट दिस कंसीलर विथ पाउडर, बट स्टिल अगर आपने सेट नहीं किया है तो भी ये इतना क्रीज नहीं करता है बिकॉज इट्स वेरी थिन इन लेयर्स. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. So it does not crease into your fine lines and it settles very immediately. आप देख सकते हो ये अभी immediately ये settle हो गया है. It's dried up after blending. बहुत अच्छे से dry up हो गया है. So it's a very nice lightweight concealer, creamy concealer, buildable. आप definitely ये concealer try कर सकते हो. Guys, next up I have Lamel's Smart Skin Serum Tinted Foundation in the shade Ivory 03. This has SPF 30 plus. So if you ask me, this is a very nice tinted foundation, serum foundation. Since it's a serum foundation, ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है एंड मॉइस्चराइज रखता है. यू कैन सी जब मैंने ऐसे अप्लाई किया है, it does not give full coverage. It gives a very nice natural glow, dewy finish to your skin. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. इट्स अ लाइट वेट फाउंडेशन.
और ये आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो और ड्यूई फिनिश लाता है. So if you want to use it on everyday basis, this is a very good foundation. You can use it on everyday basis because usually we do not use foundation on everyday basis, but this is like a skin tint, so you can use it on everyday basis and it will give you a natural finish. ये फुल कवरेज नहीं देता है, बट इफ यू वांट फुल कवरेज थोड़ा इसे आप बिल्ड कर सकते हो. बट आई हैव सीन फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, दैट्स व्हाट आई हैव सीन. एंड ये कलर इज अ बिट ऑफ फॉर माय स्किन टोन, बट देयर वर वेरी लेस ऑप्शंस, सो आई हैव पिक्ड दिस कलर. ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट वेट है, बिल्डेबल है एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी नाइस फाउंडेशन, tinted foundation. You can definitely try this. So guys, next up I have eyeshadow palette from Lamel. So this is the eyeshadow palette. This is Lamel's the Might of Utopia eyeshadow palette. इसमें आपको 16 shades मिल जाते हैं. You can see you get 16 shades. You get neon color, you get blue color, ब्लू, या ब्लू, पर्पल, लाइट पर्पल, ऑरेंज. इधर आपको इसमें एक ग्लिटर शैडो भी मिल जाता है. दीज आर शिमरी आई शैडोज. दिस इज ऑरेंज, दिस इज लाइक डार्क पिंक. सो आपको बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है. आई हैव यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल और उसमें मैंने पिंक शिमर लगाया था. And to top it up, I have used a glitter eyeshadow. This is the one I have used. So this is the glitter eyeshadow जो मैंने use किया है. So the matte colors are bit powdery, not much, but they are bit powdery. But जब आप उसे blend करते हो अपने eyes पे, बहुत अच्छे से blend हो जाते हैं. और बहुत अच्छे pigmented colors है, so you have to be very careful while applying it on your eyelids. But these are very pigmented, blendable and बहुत अच्छा color payoff देते हैं, so you have to be careful while applying it. Shimmer eyeshadows are amazing. I mean, दे आर बटरी, बहुत अच्छे से ग्लाइड होते हैं. मेरे आईज पे मैंने पिंक शेड लगाया है. सो दिस इज द शेड दैट आई हैव यूज्ड. यू कैन सी इट्स इट्स वेरी नाइस, वेरी बटरी, बहुत ही अच्छा कलर है. दिस हैज ऑरेंज, पिंक एंड गोल्डन टोन इन इट. सो बहुत ही मल्टीक्रोमैटिक, बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ देता है. आई हैव इट ऑन माय आईज राइट नाउ. And to top it up, I have used glitter, which has color glitters in it. थोड़ा fall off है. Once you apply it on your eyelids, please dust off the fall off because थोड़ा fall off है ये glitters में. And you have to dab your glitter eyeshadows when you applying it on your eyes. Yeah, so all in all, this is a very good eyeshadow. आपको 14 अच्छे matte plus shimmery and one glitter eyeshadow मिलता है. आपको बहुत सारे bright as well as neutral colors भी मिल जाते हैं एक ही eyeshadow में, so you should definitely try it. Guys, next up I'm going to talk about blush. So this is Lamel's BB blush. This is in the shade Coraline 403. So this is a coral color blush. It's cream based blush and it's a dewy blush. So आप ये everyday basis पे use कर सकते हो. It gives a very nice natural finish, but you can build it. आप इसे थोड़ा सा लेके apply करके you can get that natural finish also, or you can just build it and get a full coverage blush. So guys, if you want to use it on everyday basis, you can definitely use this on everyday basis. It's a very nice blush and it's very pigmented, so you have to be very careful while blending it. So this is the blush. Next up I have uh, I'm going to talk about is Lamel's Sun-Kissed Matte Bronzer. This is Lamel's bronzer. This is a powder finished bronzer. So this gives a very nice natural sun-kissed bronzing or contouring. ये आप देख सकते हो. ये एक बहुत ही, it's not a very dark bronzer. It's sun-kissed bronzer. So it's like
टैन कलर ब्रॉन्जर। सो आप इसे अपने कंटूर एरिया में कंटूरिंग के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन सी आई व्हाइल अप्लाइंग इट, इट वाज गिविंग अ वेरी नाइस नेचुरल टैन लुक, टैन फिनिश दे रहा था मेरे फेस को। इट वाज गिविंग सन किस्ड इफेक्ट ऑन माय फेस। आप देख सकते हो जहां जहां पे कंटूरिंग है वहां पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड गिव्स अ वेरी नाइस मैटिफाइंग sun kissed effect on your face. So this is a very nice bronzer. ये बहुत अच्छे से blend भी हो जाता है, it's not that patchy, वो patchy नहीं लगता है, बहुत अच्छे से blend हो जाता है आपकी skin में. So definitely you should try this bronzer. So next up I have Lamel's long lasting gel eyeliner. You can see I have applied this liner on my eyelids. आप देख सकते हो कितने अच्छे से वो ग्लाइड होता है। यू कैन सी आई हैव यूज्ड शिमर ऑन माय आईलिड्स, आई हैव यूज्ड ग्लिटर ऑन माय आईलिड्स, स्टिल ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस, it has a very nice butter finish, buttery finish. It glides on very nicely as like butter. बहुत अच्छे से glide होता है and it's very pigmented. You can see just in one swipe you get very nice pigmentation. आप देख सकते हो कितना अच्छा pigmentation है. So they have many colors in this. Yellow है, orange है, all vibrant colors. So आपको जो पसंद है वो आप buy कर सकते हो. Green है. I have two colors. I'm not sure मैंने वो कहाँ रखे. I'm not able to find them. But I would definitely suggest you all to buy this because even if you do not wear any makeup, just apply this as an eyeliner. आपकी bare eyes पे बहुत ही अच्छा लगेगा. It will look really very nice. You will not need any makeup. This is a very nice gel eyeliner. It glides on very nicely like butter and बहुत अच्छे से आपकी स्किन को आपकी आईज पे बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है इवन आफ्टर अप्लाइंग ग्लिटर आई शेडो, शिमर आई शेडो, एंड yeah, this is very pigmented, so you should definitely try this. So guys, next product I have is Lamel's Glow Highlighter. This is in the shade Luna. ये एक पिंक सिल्वर टोन हाइलाइटर है. इट इज वेरी नाइस हाइलाइटर. ये बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो देता है आपके हाई पॉइंट्स को. एंड इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली बिल्ड दिस. यू कैन सी आई हैव अप्लाइड इट ऑन माय चीक्स. आई लव ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स. सो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से बिल्ड किया है. सो इफ यू वांट यू कैन बिल्ड इट और you can just get a natural finish, a natural glow. So आप इसे as it is just एक swipe, just swipe it once and it will give you a natural glow. And if you want a blinding highlighter effect, then इसे आपको build करना पड़ेगा. But this highlighter is a very nice highlighter. You can see this is a highlighter. आप देख सकते हो कितना अच्छा हाइलाइटर है. आप इसे बिल्ड कर सकते हो जस्ट टू गेट दैट ब्लाइंडिंग इफेक्ट. बट आई आई वुड से दिस इज ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में. सो इट गिव्स अ वेरी नाइस नेचुरल ग्लो सिंस इट ब्लेंड्स वेरी नाइसली. एंड इफ यू वांट blinding effect, then definitely you need to build it the way I have built it. The way I am doing it, you have to build the highlighter to get that blinding effect. You can see अभी मैंने वही highlighter लगाया है. You can see कितना अच्छा effect दिया है. You can see that. So next two products that I'm going to talk about is uh, this. These are the two tints. This is a lip topper and this is a neon lip tint. So talking about this lip tint, you can see this is such a thick lip tint. आपको दिख रहा होगा. I hope the camera is capturing it. This is a very thick lip tint, but once you apply it, it gives a very nice thin layer of gloss. It does not feel heavy. अब बहुत ही lightweight है and definitely this tint is pigmented. You get pink color pigment on your lips. So it gives a very nice natural finish. It gives a very nice color, and since it's a gloss, it
is not at all sticky. Usually glosses are sticky, but this is not at all sticky. You can see I've applied it right now. ये बिल्कुल sticky नहीं है. It is very comfortable on your lips and it's very smooth in texture. आपको बहुत लाइट वेट लगता है. इट डजंट फील हेवी ऑन योर लिप्स एंड ये आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखता है सिंस इट्स अ ग्लॉस बट इट्स नॉट एट ऑल स्टिकी एंड इट डेफिनेटली लीव्स अ टिंट बिहाइंड इवन इफ आपका ग्लॉस निकल जाता है इट लीव्स अ टिंट बिहाइंड and the texture is definitely thick when you remove it from the container. आपको thick लगेगा ये texture but एक बार जब आप अप्लाई करते हो आपके लिप्स पे it glides on like butter and it becomes a thin layer of gloss. So this is one of my favorite lip tints. You can definitely try this. This is really very nice. And next I'm going to talk about is this Lamel's lip topper. This is lip shimmer topper. So this definitely this is also thick in texture. आप देख सकते हो this is so thick. It has shimmer in it, a golden small minute golden shimmer in it, but those are not visible at all. ये बहुत ही माइन्यूट है तो आपको इतना विजिबल नहीं दिखेगा बट जब आप इसे एज अ लिप टॉपर यूज करते हो आपकी कोई भी लिपस्टिक पे सो इट गिव्स अ वेरी नाइस शिमर ऑन योर लिप्स एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस कलर टू योर लिप्स सो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो दिस इज अ वेरी नाइस lip topper. So guys, this was it. This were all the products that I bought from Lamel. Actually, I purchased these products from Hope Makeup. Actually, I purchased stuff from Hope Makeup earlier also, and Hope Makeup is a very good place to purchase makeup. So मैंने Hope Makeup पे just I was scrolling through and I came across Lamel products. So when I saw new launches, I was surprised to see all these new launches because ये मैंने ना Nykaa पे देखे हैं, ना Amazon पे देखे हैं, ना Myntra पे देखे हैं. You are getting Lamel products, new launches, new arrivals only on Hope Makeup. So आप definitely ये सब new launches आप देख सकते हो. But ये मैंने बहुत पहले खरीदे हुए products हैं. So Hope Makeup पे बहुत सारे ऐसे नए products आते हैं जो आपको Nykaa पे भी नहीं मिलते, Myntra पे भी नहीं मिलते, Amazon पे नहीं मिलते. So you can definitely search for new arrivals on Hope Makeup. आपको बहुत सारे नए नए products दिखेंगे. And guys, whatever products I show in videos, these are the products that I bought from my own money. It is not a sponsored video. I do not get any sponsorship or anything. I purchase all these products for my personal use and also to show y'all and also to review for y'all so that you can buy those products if you need them. So yeah, definitely I use these products. I like using makeup. So ये मैं खुद के लिए खरीदती हूँ and then I like making videos for you all so that you get honest review from my side. Yeah, so this is the honest review from my side. You should definitely try the Mel products because these are reasonable and you get variety of good products at a reasonable price. Yeah, so this is it for today's video. See you in the next video, guys. Thank you for watching.